हिमालयन पर्वतारोहण संस्थानको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन साथै कारगिल नायकहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण। प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि हिमालयन पर्वतारोहण संस्थानको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालनसँगै कारगिलका नायकहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दार्जिलिङ स्थित हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान एचएमआईले कारगिल विजयको 25औं वर्षगाँठको सम्मानमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा कारगिलका नायकहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नाथ सबै कर्मचारी अनि उनीहरूका परिवारहरूको सहभागितामा प्रथमतः 25 क्रमबाट सूर्य नमस्कारको प्रदर्शन गरिएको थियो। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको विषयवस्तु आत्मा र समाजका निम्ति योग विषयलाई एचएमआईका प्रिन्सिपल ग्रुप क्याप्टन जयकिशनद्वारा हाइलाइट गरेका थिए भने उनले योगले प्रदान गर्ने व्यापक स्वास्थ्य लाभहरूलाई रेखाङ्कित गर्दै योग आफै समाजको निम्ति कुञ्जी हो भन्ने विषयलाई अधिक जोड दिएका थिए। योगले शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता र भावनात्मक स्थिरतालाई बढावा दिन्छ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सामाजिक सद्भाव दुवैमा योगदान पुर्याउने गर्छ भन्ने बताएका छन्। क्याप्टन जयकिशनले महिलाहरूका लागि योगका महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू पनि औलाए, जसले नियमित अभ्यासको माध्यमबाट वृद्धि, लचिलोपन, बल अनि तनावबाट मुक्ति अनुभव गर्न सक्नेछन् भन्ने पनि बताएका छन्। उनले योगा महिलाका लागि विशेष लाभदायक रहेको बताउँदै सबै महिलाहरूलाई योग अभ्यास गर्ने आग्रह पनि गरेका छन्। 21 जुन 2024 देखि 26 जुलाई 2024 सम्म सहभागी हुनेहरूलाई आआफ्नो स्थानमा योग आसन र सूर्य नमस्कार गर्न, सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भिडियोहरू अपलोड गर्न र ट्याग गर्न प्रोत्साहन गरेका छन्। इसके साथ साथ मैं इंडियन टूरिज्म मुंबई रीजन का भी हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है इस इवेंट के। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू शिखा राय, आवर इंस्ट्रक्टर हियर। थैंक यू। क्योंकि मौसम काफी सुहावना है, हो सकता है बरसात हो सकता है हमें यहाँ से वैल्यू 5 मिनट में चेंज करना पड़े। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Happy International Yoga Day to all of us. Today I just want you to give a brief information about why we do yoga. We do yoga because yoga means the union of the mind, the body and the soul. Most of the times we do not give importance to our breath, but in yoga we give importance to our body, to our mind, and the main connection between the body and the mind is your breath. So today we will be doing Surya Namaskar and few asanas which you can do in your everyday life, not only on 21st on International Yoga Day, but you can do it every day. Alright? So Surya Namaskar is just a sun salutation to the sun god, without whom there would be no life on earth. Surya Namaskar, if you do it intentionally, you will attract the healing powers of the sun and you will also attract divinity to your practice. Okay, so let's get ready. Everyone please roll your shoulders back, hands by your side. Let's close your eyes and let's start by taking 5 deep breaths. Ready? Inhale. Exhale through your mouth. Inhale. Exhale through your mouth. Breathe in. And breathe out. 2 more times. Inhale. Exhale. 1 last time. Inhale. And exhale. Alright.
expand your body for all the asanas we are about to do today. Now slowly, gently bring your chin down to your chest, and with a few gentle blinks, please open your eyes. Okay, we are going to start with a mobility drill before we get ready for your Surya Namaskar. So hands on your waist, everyone. And let's start. Inhale, look up. Exhale, look down. Keep going. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. In, breathe out. 3, breathe out. 2, breathe out. Last one. Inhale and exhale. Now let's look side to side. Going 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Looking straight. Let's move on to your shoulders. You can move your legs as well. Let's go 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Open, close your arms. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open and close your fingers. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Interlace your fingers. Wrist rotation. Go 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands in front of your chest. Start twisting. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands on your waist. Let's go. Big hip rotations. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change other side. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright, let's move down. Lift your knee one at a time. Slowly go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let's come down to your knees. Rotations. Go. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change direction. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Coming to your ankles. Let's go. Bring your feet together. Inhale. Lift your heels up. Lift your arms up. Hold your breath. Looking up. 3, 2, 1. Exhale. Down. One more time. Inhale. Look up. 3, 2, 1. Exhale. Alright. We are ready for your Surya Namaskar practice. We will go very slow and very intentional. I want all of you to stand in front of your mat. Tadasana. Roll it. Yes. Okay, ready? Stand in front of your mat. Please roll your shoulders back, hands by your side. Take a deep breath in. Inhale. As you exhale, Namaskar Asana, Ekam. Take a deep breath in, looking up, Parvat Asana, Dve. Exhale down, Pada Hasta Asana. Let your head hang loose. Trini.
let's take your right leg back, looking up to the sky, Ashwa Sanchalak Chatwari. Keep both your hands down, exhale, let's take your left leg back for Dandasana. Keep breathing. Now drop your knee, your chest and chin for the sixth pose, Shashtanga Namaskar. Inhale, Bhujanga Asana, Sat, looking up. Exhale, bring your knees up and push your hips up to the sky for Parvat Asana, Ashta. Now slowly, gently bring your right feet forward, Ashwa Sanchalak. Once again, looking up. Slowly bring both your legs together, Dasha. Looking down. Inhale, let's come to the 11th pose. Looking up to the sky once again. And slowly, gently bring your hands in front of your chest. And hands down. The same thing will repeat on the left side. Inhale as you exhale. Namaskar Asana. Ekam. Inhale, dve. Exhale down, knee. Left leg goes back, Chatwari. Look up. Exhale, right leg goes back, Pancha. Drop your knee, your chest and your chin. Sat. Inhale, Bhujanga Asana. Sapta. Exhale, tucking your toes and look down, Ashta. Right leg forward, slowly, looking up to the sky, Nama. Both legs together, Dasha. Inhale, hands up to the sky, Ekadasha. Both hands in front of your chest, Dwadasha. Hands by side. On the left, inhale, as you exhale, Ekam. Inhale, dve. Exhale down, knee. Left leg goes back, Chatwari. Right leg goes back, Pancha. Drop your knee, your chest, your chin, Sat. Inhale, looking up, Bhujanga Asana. Alright, coming to your 8th pose. Now bring your left leg forward, keeping your right knee down, both legs together. Inhale, let's take your arms up, bend your knees, push your hips out, hands in front of your chest. Alright, now before we move on to the 3rd round, also make sure that Surya Namaskar is an active form of meditation. So please watch your thoughts before we move on to the 3rd round. Ready? Let's go. Inhale as you exhale. Ekam. Dve. Trini. Right leg goes back. Chatwari. Left leg goes back. Pancha. Sat. Keep breathing. Inhale. Sapta. Exhale. Ashta. Inhale, right leg forward, Nava. Both legs together, Dasha. Inhale, arms up, bend your knees, push your hips out. And hands in front of your chest. Let's move on to the left. Inhale, as you exhale, Ekam. Dve. Trini. Left leg goes back, Chatwari. Pancha. Sat, Sapta, Ashta, Nava, Dasha, Ekadasha, Dwadasha. Rest. Very good. Let's put the hands on our laptop.
ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। All right. Let's go again. Roll your shoulders back with a smile on your face. Let's begin. Inhale as you exhale. Wake up. Inhale, quick. Exhale down to the knee. Right leg goes back. Look up. Chest body. Punch up. Sat. Sapta. Ashta. Nava. Dasha. Ekadasha. Dwadasha. Hands by side. Again, inhale as you exhale. Ekam. Dve. Trini. Left leg goes back. Chatwari. Pancha. Sat. Sapta. Ashta. Left leg forward. Nava. Dasha. Ekadasha. Dwadasha. Continue. Inhale as you exhale. Ekam. Dve. Trini. Right leg. Chatwari. Pancha. Sat. Sapta. Ashta. Nava. Dasha. Ekadasha. Dwadasha. Hands by side. Inhale as you exhale. Ekam. Dve. Trini. Left leg goes back. Chatwari. Pancha. Sat. Sapta. Ashta. Left leg. Nava. Dasha. Ekadasha. Dwadasha. Hands by side. We completed 10. I just want you to take a moment here. Breathe. Find out how are you feeling. Breathe. 3, 2, and let's get ready for the next 10. Let's go. Inhale as you exhale. Ekam. Dve. Trini. Right leg goes back. Left leg goes back. Drop your knee, chest, chin. Inhale. Exhale. Inhale, right leg forward. Exhale, both legs together. Inhale, arms up. Exhale, hands in front of your chest. Breathe. Inhale as you exhale. 1. Take a deep breath in. 2. Exhale down. 3. Left leg goes back. Inhale. Right leg goes back. Exhale. Drop your knee, chest, chin. Hold your breath. And then take a deep breath in. Puja. Exhale. Inhale. Left leg forward. Exhale. Both legs together. Inhale. Arms up. Exhale. Hands in front of your chest. Continue. Inhale. As you exhale. Ekam. Dve. Breathe out. Trini. Right leg. Chatwari. Left leg. Pancha. Sat. Sapta. Ashta. Right leg forward. Nava. Both legs together. Dasha. Ekadasha. Dwadasha. Again, inhale. As you exhale. Ekam. Dve. Trini. Left. Chatwari. Pancha. Sat. Sapta. Ashta. Nava. Dasha. Ekadasha. Dwadasha. With the sun god in our mind, let's begin the third round again. Inhale as you exhale. Ekam. Dve. Trini. Right. Chatwari. Pancha. Sat. Sapta. Ashta. Nava.
Ekadasha, Dwadasha. Again, inhale as you exhale. Ekam, Dve, Trini, Chatwari, Pancha, Sat, Sapta, Ashta, left leg, Nava, Dasha, Ekadasha, Dwadasha. Hands by side, inhale as you exhale. Ekam, Dve, Trini, Chatwari, Pancha, Sat. Inhale, Sapta. Exhale, Ashta. Inhale, right leg forward. Exhale, both legs together. Inhale. Exhale, hands in front of your chest. To the left, ladies and gentlemen. Inhale as you exhale. Ekam, Dve, Trini. Left leg, Chatwari. Pancha, Sat, Sapta, Ashta, Nava, Dasha, Ekadasha, Dwadasha. Again, inhale as you exhale. Ekam, smile. Dve, Trini. Right leg, Chatwari. Pancha, Sat, Sapta, Ashta, Nava, Dasha, Ekadasha, Dwadasha. Hands by side, inhale as you exhale. Ekam, Dve, Trini. Left leg, Chatwari. Pancha, Sat, Sapta, Ashta. Left leg, Nava, Dasha, Ekadasha, Dwadasha. Hands by your side. We completed 20. Be proud of yourself. Let's take a few moments here. Close your eyes and find out how you're feeling after you completed 20 Surya Namaskar. Breathe. What kind of thoughts are you getting in your mind? How is your body feeling? Alright, slowly bring your chin down to your chest. Few gentle blinks. Open your eyes. And let's continue. Next 5. Inhale as you exhale. 1. Inhale 2. Exhale down 3. Right leg goes back. 4. Left. Knee, chest, chin. Inhale. Bhujam. Exhale. Down dog. Inhale. Right leg forward. Exhale. Both legs together. Inhale. Arms up. Bend your knees. Push hips out. Hands in front of your chest. Hands by side. Inhale. As you exhale. Ekam. Dve. Trini. Left leg goes back. Chatwari. Right leg goes back. Pancha. Sat. Sapta. Ashta. Exhale. Left leg forward. Nava. Both legs together. Dasha. Ekadasha. Dwadasha. Hands by side. Inhale. As you exhale. Ekam. Inhale. Dve. Exhale. Down 3. Inhale. Right leg goes back. Exhale. Left. Drop your knee, chest, chin. Inhale. Up. Exhale. Down dog. Inhale. Right leg forward. Exhale. Both legs together. Inhale. Arms up. Bend your knees. Push your hips out. Hands in front of your chest. On the left, inhale. As you exhale. Ekam. Dve. Trini. Left leg goes back. Chatwari.
Chatuari, Pancha, Sat, Sapta, Ashta, Nava, left leg, Dasha, both legs. Inhale and exhale. One more time, inhale. As you exhale, wake up. Dve, Trini. Right leg goes back. Chatuari, Pancha, Sat, Sapta, Ashta. Inhale, right leg forward, look up. Exhale, both legs together. Inhale, arms up, bend your knees, push hips out. Hands in front of your chest. One last time, inhale. As you exhale, ekam. Dve, Trini. Left leg goes back. Chatuari, Pancha, Sat, Sapta, Ashta. Left leg forward. Nama. Both legs together. Dasha. Ekadasha. Dvadasha. Hands by side. We completed 26 Surya Namaskar this morning. I want you to breathe. I want you to feel whatever you're feeling right now. Keeping your focus on your breath. Make it normal. Relax your shoulders. Relax your facial muscles. Chin down to your chest. Few gentle breaths. Open your eyes. Continue to observe. Let's go ahead to Kaya. वेरी वेल एवरीवन। कोई मुश्किल इंसान के साहस से बड़ी नहीं हो सकती है। दिस इज व्हाट आप सभी ने प्रूव किया है। डीजल हुई थी, मौसम खराब था, टेम्परेचर का डिप था, सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत करीब करीब सभी को है। दिस 25 सीक्वेंस टू नमस्कार डेडिकेटेड टू ऑल द वॉरियर्स, द Kargil saviors who have sacrificed their life as we celebrate 25 glorious years of Kargil victory on 26th July. I request जिसने भी जितना भी सीखा है सूर्य नमस्कार, जैसे हम सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपने जो कारगिल वॉरियर्स हैं, जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है देश के लिए, हमारे लिए, अगले कुछ दिनों तक 26 जुलाई तक जहां भी मौका लगे, जितना भी मौका लगे, सूर्य नमस्कार करके इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, इंडिया टूरिज्म और MOD की वेबसाइट के ऊपर अपने लिंक भेजते हैं, ताकि जितने भारतीय सैनिक हैं उनको एक हौसला आएगा कि जब वो सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हम सब भारतीय उनके साथ हैं, तन से, मन से और अपनी आत्मा से। विद दिस वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। वेदर इज नॉट वेरी गुड फॉर द डे, बट यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब। आई थिंक मैम विल टेक अ ब्रेक है, एंड इफ वेदर्स ओपन अप विल डू सम मोर एक्सरसाइज, अदरवाइज विल जस्ट ब्रेक अप फॉर सम टाइम। ठीक है श्री? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी वेल डन, कीप इट अप, सो प्राउड ऑफ यू। जो लेट कमर्स है मैम, आपके लिए दोबारा शुरू करेंगे अभी 25 राउंड को, नॉट टू वरी। संदीपन, संदीपन इसको फिनिश कैसे करते हैं? इधर फिनिश ये सेंड ऑफ फिनिश का है इसका, क्रॉस करने से डायरेक्ट चला जाएगा। क्रॉस करूँ? एंड योर लाइव वीडियो।
Jai Hind and Namaskar. Greeting from Himalaya Mountains to Darjeeling. Today is 21st June 2024 and जिस तरह से पूरा विश्व जो है आज इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहा है, उसी तरह से हम इंडिया टूरिज्म के साथ मिलकर के HMI के इन वादियों में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारी टीम ने करीब 100 पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर के 25 सीक्वेंस ऑफ सूर्य नमस्कार किए हैं। मौसम खराब होने के वजह थोड़ा सा भी हमने इसको थोड़ा क्लोज किया है, फिर से शुरुआत करेंगे। जो हम 25 सीक्वेंस सूर्य नमस्कार किए, इसका थीम यही है कि जो इस साल हम कारगिल विक्ट्री का 25वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो 25 सीक्वेंस सूर्य नमस्कार इज अ हम्बल ट्रिब्यूट फ्रॉम ऑल इंडियंस। इट इज नॉट ओनली दैट टीम HMI, इट इज द ऑल इंडियंस, जहाँ भी हम कहीं भी हैं उन सब की तरफ से कारगिल के सेवियर्स, कारगिल के वॉरियर्स, जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है हमारे राष्ट्र के लिए, उनके प्रति ये श्रद्धांजलि है। 25 सीक्वेंस सूर्य नमस्कार सिंबलाइजिंग 25 glorious years of victory on Kargil. We are thankful to India Tourism, Regional, Mumbai for supporting this cause. और आज की खासियत ये रही कि खराब मौसम के बावजूद भी हमारे साथ टीम के अंतर्गत यहाँ पे बच्चे भी थे और लेडीज भी थी और आर्म फोर्सेज पर्सनल भी थे। सभी ने जो है राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो है यहाँ पे हमने 25 सीक्वेंस सूर्य नमस्कार किया है। और जैसा कि आप राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं, इसकी जो डायमेंशन है इट इज 780 स्क्वायर फीट, 780 स्क्वायर फीट। अगेन दिस 780 स्क्वायर फीट इज सिंबलाइजिंग द 78 glorious years of Indian independence as we are going to celebrate 75 Independence Day on 15th August 2024. About this flag, जैसा कि काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा कि हमने इस तिरंगे को 780 स्क्वायर फीट के तिरंगे को मार्च के महीने में कंचनजंगा नेशनल पार्क में अपने दिव्यांग जन के साथ लहराया था और वहीं से इसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के महीने में हम 7,800 स्क्वायर फीट के तिरंगे को किलिमंजारो, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है, वहाँ पे अपने दिव्यांग क्लाइंबर के साथ इसको हम लहराएंगे, सिम्बलाइजिंग 78 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।